મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી મહાપ્રભુજી ખૂબ સુંદર મજાનું અહીંયા પેઇન્ટિંગ છે. ગુડ મોર્નિંગ, સુપ્રભાત. ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને હું છું મિત્તલ પટેલ. ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતની આજની સફર મોર્નિંગને તમારી બ્યુટીફુલ બનાવવા માટે પહોંચી ગઈ છે. ખૂબ સુંદર મજાનું આર્ટિસ્ટે કામ કર્યું છે. શ્રીનાથજીના પેઇન્ટિંગ બનાવ્યા છે અને આ આર્ટિસ્ટ બોમ્બેથી અમદાવાદ આવ્યા છે અને પોતાનું એક્ઝિબિશન કર્યું છે. સોલો એક્ઝિબિશન છે અને ખૂબ સુંદર રીતે શ્રીનાથજીને અલગ અલગ થીમ પર અહીંયા દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તો ચાલો મુલાકાત લઈએ એક્ઝિબિશનની અને આર્ટિસ્ટની. શ્રીનાથજી ઉપરના પેઇન્ટિંગ ખૂબ સુંદર રીતે આર્ટિસ્ટે અહીંયા વર્ણવ્યા છે અને વિઝિટર પણ છે અને સિનિયર આર્ટિસ્ટ પણ છે. જાણીએ તેમના શબ્દોમાં. શું નામ છે આપનું? હંસાબેન પટેલ. અને હંસાબેન, આપને એક્ઝિબિશન ખૂબ બારીકાઈથી જોઈ રહ્યા હતા. એક એક પેઇન્ટિંગને બખૂબી તમે જોઈ રહ્યા હતા અને શ્રીનાથજીને દર્શન પણ તમે કરી રહ્યા હતા. તો આ જે પેઇન્ટિંગની મજા છે અને શ્રીનાથજી જે રીતે દર્શાવ્યા છે, આપ કઈ નજરથી જુઓ છો? સૌભાંગીની બેને આજે પેઇન્ટિંગ એમણે શ્રીનાથજીના બનાવ્યા છે. અમે પેઇન્ટિંગના જે શ્રીનાથજીમાં જઈએ તો આમ ઉભેલા જ જોયા છે, પણ અમને પોતે ડાન્સ કરતા, મોરલી વગાડતા, અલગ અલગ થીમ પર એમને કર્યા છે. અને એટલા અને જે ગાયોની જે ગાયોને જે એમને લીધી છે તો જાણે શ્રીનાથજી જોડે વાતો કરતા હોય, શ્રીનાથજી જોડે એ આમ મળી ગયેલા હોય એવી ભાસ થાય છે. અને એક્ઝિબિશન હોલમાં અંદર આવતા એક એટલો સુંદર ભાસ થાય છે કે નીકળવાનું મન નથી. એક પેઇન્ટિંગ જોયા પછી બીજા પેઇન્ટિંગમાં જઈએ એટલે આમ અદ્ભુતતા એટલી બધી લાગે છે કે કેવી રીતે અહીંથી ખસવાની હિંમત તો થતી નથી. બારે ઘડીએ બીજા પેઇન્ટિંગ જોઈએ છે. અને બીજું એમને શ્રીનાથજીને રમકડા ગમતા એમને જે ઇન્સ્ટોલેશન કર્યું છે બહુ જ ખૂબ સુંદર રીતે અને બહુ બારીકાઈથી કામ કર્યું છે. અમને પેઇન્ટિંગનું એક્ઝિબિશન જોવાનું બહુ ગમે. તમને પર્સનલી શ્રીનાથજી ખૂબ ગમે છે, તમે ભક્ત પણ છો, તો આ એક્ઝિબિશનની મજા તો તમે માણી જ રહ્યા છો, દર્શન પણ તમે કરી રહ્યા છો. તો એક્ઝિબિશનમાં પેઇન્ટિંગમાં જે બારીકાઈ દર્શાવવામાં આવી છે, એક સિનિયર આર્ટિસ્ટ તરીકે તમને શું વધારે સ્પર્શી ગયું? એમને જે ટેકનિક અને આપણે કેળના પાન છે, ગાયો છે, મુગટ છે, એમની બેઠક છે, હિંડોળા છે, એ એટલા સુંદર રીતે કર્યા છે. એમને જે ટેકનિક કરી છે ને એ ટેકનિક તો એટલી અદ્ભુત છે. એમાં એમને બ્રોકેટ કપડાનું, ભરતનું કપડાનું એ બધી ઇફેક્ટ બહુ સુંદર આપી છે. તો મિત્રો, સિનિયર આર્ટિસ્ટને તો એક્ઝિબિશન ખૂબ ગમી ગયું છે અને જે બારીકાઈથી આર્ટિસ્ટે કામ કર્યું છે તે પણ સિનિયર આર્ટિસ્ટ એપ્રિશિએટ કરી રહ્યા છે. બીજા પણ આર્ટિસ્ટ છે તેઓ પણ એક્ઝિબિશન નિહાળવા માટે આવી રહ્યા છે. તેમની પાસેથી પણ જાણીએ કે એક્ઝિબિશનમાં તેમને શું નવું દેખાઈ રહ્યું છે.
આર્ટિસ્ટ છે તેમના શબ્દોમાં જાણીએ કે એક્ઝિબિશન જોતાં તેમને કેવું ફીલ થઈ રહ્યું છે. શ્રીનાથજી ખૂબ સુંદર અહીંયા ક્રિએશન બતાવવામાં આવ્યું છે. ભગવાનના અલગ અલગ રંગ રૂપને બારીકાઈથી આર્ટિસ્ટે બતાવ્યું છે. આપ સિનિયર આર્ટિસ્ટ છો તો આપને શું ગમે છે અહીંયા? ખરેખર તો આમ શ્રીનાથજીની આપણે કલ્પના કરીએ એટલે શ્રીનાથજી ઊભેલા હોય બસ એ જ આપણા નજર સમક્ષ આવે. પણ આમાં આમના જે પ્રદર્શનમાં જે શ્રીનાથજી દોરેલા છે, નાચતા બતાવ્યા છે, કુદરત સાથે છે, ગાયો સાથે છે, પાછી પેલું સૌર્યમંડળ એની અંદર બતાવેલા છે. અને એટલું બારીકાઈથી એમણે કામ કરેલું છે કે એકદમ દૂરથી પણ જુઓ તો સરસ લાગે અને બારીકાઈ જોવી હોય તો એકદમ એની નજીક જવું પડે. કારણ કે એમ એક પેઇન્ટિંગમાં તો એમને ગાયો બતાવી છે અને કૃષ્ણ ભગવાન એટલે શ્રીનાથજી બતાવ્યા છે એ આખા અંદર જંગલમાં હોય અને એની આજુબાજુ બધા જે ઘાસ હોય, ગાયોની અંદર બી ફૂલ છોડ અંદર ઉગી ગયેલા છે એવું આપણને જોવા મળે. જ્યારે અહીંયા એમના દરેક વિવિધ રૂપે એક સૂર્યમુખીના ફૂલમાં બી શ્રીનાથજીને ઊભા કરેલા છે. અને ઊભેલા શ્રીનાથજી તો અને કમળ સાથે એમને જે પાણીમાં જે કમળ ઉગે એ છેક એમને ઓઢેલું છે, આખું વસ્ત્ર છેક ઉપર સુધી જાય છે એવા આખી નદી બતાવી છે. અને એની અંદર કમળના મસ્ત સુંદર કલર, ગુલાબી રંગ અને પાણી લીલું બતાવ્યું છે. ને એટલું સુંદર લાગે છે કે આપણને એમને જોતા જ જઈએ અને એમાં આપણને ખરેખર મંદિરમાં જાણે આપણે ઊભા હોઈએ એવું આપણને થાય. તો મિત્રો આ હતા સિનિયર આર્ટિસ્ટના શબ્દો કે જ્યારે મંદિરમાં આવ્યા હોય તેવું અહીંયા ફીલ થઈ રહ્યું છે. એક્ઝિબિશનમાં જ્યારે તમે એન્ટર થાઓ તો એક પોઝિટિવ એનર્જી અહીંયા દેખાઈ રહી છે. એટલે ખૂબ સુંદર મજાના કલરો આપણને ખેંચી રહ્યા છે. આપણને જ્યારે સાક્ષાત પ્રભુના દર્શન થઈ રહ્યા હોય તેવું ફીલ કરાવે છે. બીજા પણ આર્ટિસ્ટો છે તેમની પણ મુલાકાત લેતા રહીએ. સોલો એક્ઝિબિશન છે અને આર્ટિસ્ટ બોમ્બેથી અમદાવાદ આવ્યા છે અને ખૂબ સુંદર મજાના શ્રીનાથજીને કંડાર્યા છે. પોતાની આગવી છટાથી પ્રભુના દર્શન તમે કરી રહ્યા હો એવું ફીલ करावे છે आर्टिस्ट. आपका पूरा नाम क्या है? शुभांगी श्याम सामंत. शुभांगी, आप कितने साल से आर्ट के साथ जुड़े हुए हो? अराउंड 35 ईयर्स, 35 साल. लेकिन श्रीनाथ जी के मैं कर रही हूँ वो 25 साल, मतलब 20 साल से ऊपर हो गए. कितने पेंटिंग आप बना चुके हो श्रीनाथ जी के पर? मैं गिनती भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बहुत बहुत कर पाई, मतलब बहुत छोटे बड़े सब. मतलब मैंने कभी गिने नहीं, बट ऐसा लगता है कि मैंने बहुत किए हैं पेंटिंग्स. मैंने कभी गिने नहीं. आपका जो एग्जीबिशन है, सोलो शो है, तो उसमें आपने श्रीनाथ जी को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है, भगवान को प्रेजेंट किया है. तो आप एग्जीबिशन में आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब से मुझे पता चला कि वो एक छोटा बच्चा है, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ, तो मैं तो श्रीनाथ जी के बारे में ज़्यादातर जानती नहीं थी. लेकिन जब से मुझे पता चला है कि ये छोटा बच्चा है और मतलब उसको जैसे हवेली में उसकी सेवा करते हैं, उसको 8 बार कपड़े बदली करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं उसको, तो ये जो सेवा है वो मैं पेंटिंग के माध्यम से करना चाहती हूँ.
ये जो पेंटिंग का माध्यम है उसमें भी मैं उसको सजाती हूँ, संवारती हूँ उसको, मतलब और ऐसे भी सोचती हूँ कि ये छोटा बच्चा है तो वो नाचेगा, दौड़ेगा, लहराएगा, उसके मतलब जो भी हम बच्चों में देखते हैं वो उसी में है, तो मैंने पेंटिंग में उसको लाने की कोशिश की है। पेंटिंग में अलग अलग थीम भी दिखाई गई है, कमल दिखाया गया है, ब्यूटीफुली रंग दिखाए गए हैं, जो कापड़ कहते हैं उस पर भी आपने काम किया है, कपड़े पर भी काम किया है आपने। नहीं, श्रीनाथ जी अगर कहें तो वो फुल ऑफ कलर, मतलब वो कलर के बिना उसको सोचना ही ये सोचा ही नहीं जा सकता है, फुल ऑफ कलर। और नेचर हम लोग जो जिसको निसर्ग बोलते हैं, वो निसर्ग तो इतने कलर से भरा हुआ है कि हम लोगों को भी पता नहीं है कि नेचर में कितना क्या भरा पड़ा है, तो मैं उसको रिलेट करती हूँ उसके साथ। और एग्जीबिशन में कितने पेंटिंग लगाए गए हैं? अभी कुछ 25-26 पेंटिंग है। दूसरे भगवान भी दिखाए गए हैं, महावीर। वो जो मैंने 3 पेंटिंग लगाए हैं वो जैन मैथोलॉजी के हैं, क्योंकि मैं जैन मैथोलॉजी के ऊपर भी बहुत पेंटिंग्स कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि अहमदाबाद में भी कुछ जैन लोग भी शायद, क्योंकि वैष्णव और जैन एक साथ कभी कभी तो रिश्ता भी होता है कई कई घरों में जैन और वैष्णव का, तो इसीलिए मैंने ये इंट्रोडक्शन के लिए मैं 3 पेंटिंग लेके आई हूँ। कितने पेंटिंग यहाँ पे लगाए गए हैं श्रीनाथ जी के? श्रीनाथ जी के 26 पेंटिंग है और बाकी वो जैन के 3 पेंटिंग करके 29 पेंटिंग्स है यहाँ। साइज़ कितनी है आपने लगाई गई है? साइज है वो कुछ 6 फीट के है, 5 फीट है, 4 फीट, 3 फीट, सबसे छोटा तो 12 इंचेस बाई 3 फीट के भी है, छोटे बड़े सब है। जैसे जैसे मुझे जो सब्जेक्ट है वो जो पेंट करना है ना, वो हिसाब से मैं साइज़ डिसाइड करती हूँ। हाँ, मंदिर में जाते हो, ऑब्जर्व करते हो, बाद में बनाते हो, या अपने मन से ही आप श्रीनाथ जी को ड्राइंग करते हो? नहीं, मैं हवेली में जाती हूँ कभी कभी, लेकिन हवेली में जाने से भी जब भी मैं लोगों के साथ बात करती हूँ ना, जो वैष्णव इसमें है, उनसे मुझे बहुत सारा उनके फीलिंग्स, उसके प्रति जो प्रेम है, जब भी मैं वो सुनती हूँ ना, तो मैं मेरे पेंटिंग में लाने की कोशिश करती हूँ। आपने पेंटिंग में बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है, कलर्स दिखाए गए हैं, अलग अलग कलर्स दिखाए गए, गई माता को भी दिखाया गया है कि कृष्ण भगवान के जीवन में, श्रीनाथ जी के जीवन में क्या क्या था। आपने एक बैठक भी दिखाई गई है। अब हवेली में जाते हो तो हवेली में जाके सबसे बात करके आप ड्राइंग करते हो, तो वो आइडिया कहाँ से आता है कि ऐसे ऐसे मुझे बनाना है? नहीं, मैं उनसे बात करती हूँ, मतलब कभी कभी तो उन लोगों को पता भी नहीं कि मैं आर्टिस्ट हूँ। हाँ, मतलब मेरे पहचान के हैं ऐसे भी नहीं है, तो कभी कभी तो मैं उनकी बातें ऐसे साइड में खड़े रह के भी कुछ सुनने के लिए आता है, तो वो भी मैं लाइक अ टिश्यू पे, मतलब वो जो इंक पेपर रहता है ना, ब्लॉटिंग पेपर, सो वो वैसे होता है मेरा, कि अगर कोई कुछ कहे श्रीनाथ जी के बारे में तो वो ब्लॉटिंग पेपर के जैसा मेरे अंदर मतलब आ जाता है ऐसे, और वो कभी बाहर आता है पेंटिंग में, मुझे भी खुद को भी पता नहीं चलता है ऐसे अंदर से। जैसे हवेली में जब भी कृष्ण जन्म का दिन होते हैं ना, तो वो फूलों से सजाते हैं, झूला सजाते हैं, तो मैंने तो ड्राई फ्रूट का भी झूला देखा है, तो यू नो आई अमेज विद दोज काइंड ऑफ सब्जेक्ट। तो मैंने एक रोज़ का भी झूला बनाया, और ये एग्जीबिशन में मेरा कृष्ण कमल के साथ झूला बनाया है, क्योंकि हवेली में कृष्ण कमल के फूल के साथ झूला बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो फूल एकदम नाजुक होता है, और इतने 7-8-10 फुट का झूला कृष्ण कमल के फूल से शायद टेक्निकली या प्रैक्टिकली नहीं बन पाएगा, बट मैंने पेंटिंग में तो दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखने आ रहे हैं तो अप्रिशिएट कितना मिल रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं एग्जीबिशन के बारे में, आपको क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे? नहीं, मैं हमेशा ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब भी ये मेरे पेंटिंग्स या मैंने किए हुए पेंटिंग्स देखने के लिए आते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि अरे ये कुछ अलग ही ये है, मतलब इनका दिखाने का तरीका अलग है, इन्होंने मतलब जो पेंटिंग्स होते हैं श्रीनाथ जी के वैसे तो ये है नहीं, तो इसीलिए मैंने अभी कहा था ना कि नेचर के साथ मैं रिलेट करती हूँ, तो वो सब्जेक्ट के साथ मैं उसको मतलब कंपोज भी करती हूँ, कलर्स भी उसमें आते हैं, या और सबसे बड़ी बात है कि उसमें फीलिंग, जो पेंटिंग देखने के बाद जो फीलिंग होना चाहिए ना, वो मेरा हुआ है पहले, फिर देखने वाले का हो जाएगा, ऐसे है।
आपने जो पेंटिंग बनाया है, एक एक पेंटिंग है जो नेचर के साथ जुड़े, बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है आपने। तो नेचर को और भगवान को आपने जिस तरीके से कलर के साथ दिखाया गया है, और एग्जीबिशन में जो भी चीज़ है, पिचकारी है, कलर है, भगवान जो खेलते वो खिलौने भी है, हाँ आइडिया कहाँ से आता है सब? नहीं, कभी भी है ना, अगर आप नेचर को देखेंगे ना तो उसको है ना बारीकी से देखो, तो बारीकी से देखने के बाद आपको है ना वो एक ही चीज़ में पूरा पेंटिंग नज़र आएगा। मतलब कोई भी नेचर की छोटी बात, तो ये तो मतलब भगवान बोले तो ये सब नेचर के साथ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ है। लेकिन नेचर में एक फीलिंग भी होता है, जैसे कि बरसात हो या फॉरेस्ट हो या फूल का गार्डन हो या केली का पत्ता हो या केली का फूल हो, तो अगर आप उसको इंडिविजुअली देखेंगे तो आपको मतलब मन से होना चाहिए कि अरे ये क्या बात है। मतलब आप अगर उसमें आश्चर्य हो आपको, तो आपके पेंटिंग में भी वो आ सकता है। जो भी कोई आर्टिस्ट है, ज़रूरी नहीं कि पेंटिंग में है, परफॉर्मिंग में है, कि म्यूज़िक में है, कि एनी काइंड ऑफ आर्ट, उसमें अगर आप नेचर के साथ जुड़े हो, नेचर को आप फील करते हो ना, तो अपने आप आपके पेंटिंग में आ जाएगा। और वही बात मेरे पेंटिंग में है कि मैं हमेशा अमेज होती हूँ, मुझे हर कोई छोटी चीज़ भी डिफरेंट लगती है, मैं उसको बारीकी से देखती हूँ, फिर वो आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि अगर सपोज़ केली का फूल है, अगर उसको देख के केली के फूल करके ही पेंट करना है, ज़रूरी नहीं है। उसके कलर्स देखिए, वो वाइट के साथ जुड़ा है, उसका जामुनी कलर है लेकिन वो डल है। ये सब बातें जो है ना, ये आप बारीकी से देखो तो आप किसी भी तरह उसको पेंटिंग में ला सकते हो। हाँ, ऐसे તો આર્ટિસ્ટને ખૂબ સુંદર રીતે વાત વર્ણવી કે એક્ઝિબિશનમાં તેમણે જે રીતે કામ કર્યું છે અને કેટલા સુંદર પ્રભુને અહીંયા દર્શાવ્યા છે, શ્રીનાથજીને દર્શાવ્યા છે, સાથે સાથે પ્રભુને નેચર સાથે ખૂબ બખૂબી અહીંયા ક્રિએટ કર્યા છે। બીજા પણ અનેક વિઝિટર છે, તેમની પણ મુલાકાત લેતા રહીએ। શું નામ છે આપનું? श्याम सामंत। और सर, आप भी एक आर्टिस्ट हो, आप क्या करते हो? मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ एज एन ग्राफिक डिज़ाइनर एंड आर्ट डायरेक्टर करके। और वैसे शुभा और भी तो आर्ट डायरेक्टर ही थी पहले, फिर कई साल के बाद फिर उसमें लाइक सोचे मैं बोर ही हूँ एडवर्टाइजिंग से, तो मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। बोला जो करना एक इट्स योर थिंग्स है, यू कैन डू इट वॉट एवर यू वांट है। तो काफ़ी सारा किया है। पेंटिंग के पहले वो तो फर्नीचर भी किया है उसने डिज़ाइन, पॉटरी पेंटिंग भी की है। फिर अभी बहुत कम लोगों को यहाँ पे पता होगा, लेकिन वहाँ उसकी कुछ साड़ी डिज़ाइन भी करती है। पूरा उसको हेल्प करते हो, पूरी तरह से सपोर्ट करते हो? कोशिश तो करता हूँ सपोर्ट करने की। आप बॉम्बे से यहाँ पे आए हो और अहमदाबाद में बहुत ही अच्छा ये गैलरी है, तो आप बहुत ही लोगों के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? लोग अप्रिशिएट कितना करते हैं, विजिटर क्या कहते हैं? नहीं, एक तो है कि जो भी लोग अभी आज पहला ही दिन था, जो भी लोग यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने ये जो श्रीनाथ जी का जो रेंडिशन सुबह ने किया है, तो क्या है कि इस तरह का रेंडिशन, श्रीनाथ जी की एग्जीबिशन तो
काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन इस तरह का रेकग्निशन शायद उन्होंने पहले देखा नहीं होगा, बिकॉज उनको इतना ये लगा कि यार ये ऐसे भी श्रीनाथ जी दिखते हैं क्या, है ना। और तो एंड जो नेचर उसने उसमें इन्वॉल्व करके किया है, काम किया हुआ है, वो लोगों को बहुत पसंद आया इनफैक्ट। और बेसिकली यहाँ के लोग वैसे आर्ट अप्रिशिएट करने के लिए काफ़ी लाइक नो, मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक बॉम्बे से बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरा ये। મિત્રો સિનિયર આર્ટિસ્ટ છે અને એડવર્ટાઇઝમાં કામ કરતા હતા, સાથે સાથે તેમના વાઇફને પણ ખૂબ સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. બોમ્બેથી તેઓ અમદાવાદ આવ્યા છે અને અમદાવાદમાં એક્ઝિબિશનમાં તેમને ખૂબ સરસ પ્રતિસાદ પણ મળી રહ્યો છે. આર્ટિસ્ટ છે અને ઘણા વર્ષોની મહેનત બાદ તેઓ અત્યારે આ મુકામ પર પહોંચ્યા છે. આપણને એક સરસ તેમના જીવનનો મેસેજ આપી રહ્યા છે. मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पेंटिंग डिस्प्ले किए हैं और लोग आते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको भी फीलिंग मेरे जो फीलिंग्स है उन तक पहुँच रहे, तो मेरा ये मैसेज है कि अगर आप में कोई भी कला हो, किस तरह की भी कला हो, तो आप अगर उसको नेचर के साथ जुड़ जाएंगे, अगर आप नेचर के साथ, तो आप अपने आप परमेश्वर से भी, भगवान से भी जुड़ जाएंगे. और वो जो एनर्जी है ना, वो आपको आप में भी उभर के आएगी. और आपका जो भी काम हो, जो आप प्रेजेंट करना चाहते हो, जो एग्जीक्यूशन करना चाहते हो, वो बहुत जितना भगवान सुंदर है उसी तरह सुंदर रूप से बाहर आएगा आपका भी जो भी काम है. તો મિત્રો, આર્ટિસ્ટે તો તેમના જીવનનો ખૂબ સરસ મેસેજ આપી દીધો કે તમારામાં કોઈ આર્ટ હો તો તમે તેની સાથે જોડાઓ, નેચર સાથે જોડાઓ, આપોઆપ તમને પરમાત્માની અનુભૂતિ થશે અને તમે તમારું કામ સાથે દીપી ઉઠશો. એક્ઝિબિશન નિહાળવા માટે આવી રહ્યા છે, તેમની પાસે પણ આપણે જાણીએ કે એક્ઝિબિશનમાં તેમને કેવું લાગ્યું. સર, આપનું નામ શું છે? શૈલેષ જાની. અને સર, એક્ઝિબિશનમાં શ્રીનાથજી ખૂબ સુંદર રીતે આર્ટિસ્ટે દર્શાવ્યા છે, તો આપને કેવું લાગી રહ્યું છે અત્યારે? અદ્ભુત અને સુંદર, જે કાળજીપૂર્વક એમને જે રચનાઓની જે કલાકૃતિ તે દર્શાવી છે, અવિસ્મરણીય છે. એકદમ સરસ લાગ્યું. અને પેઇન્ટિંગ વધારે ગમે? ના, એકદમ સરસ લાગ્યું. અને ખુશ થઈ ગયું, દિલ ખુશ થઈ ગયું. પ્લસ જે એમને ઉપસાવ્યા છે બધા જે ચિત્રો, અદ્ભુત રીતે ઉપસાવ્યા છે, જેની કોઈ તુલના થઈ શકે એવી નથી. હાર્ટીએસ્ટ કોંગ્રેચ્યુલેશન ટુ હર, સારંગીબેન. તો મિત્રો, આવી જ રીતે અનેક વિઝિટર આવી રહ્યા છે અને મુલાકાત લઈ રહ્યા છે એક્ઝિબિશનની, અને તેમને એક્ઝિબિશનમાં આવ્યા બાદ જાણે મંદિરમાં આવ્યા હોય તેવી અનુભૂતિ થઈ રહી છે. ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતમાં આજે આપણે આર્ટની સફરે આવ્યા હતા. શ્રીનાથજીને ખૂબ સુંદર રીતે નેચર સાથે કનેક્ટ કરીને આર્ટિસ્ટે ખૂબ બખૂબી વર્ણવ્યા છે. નાની નાની વાતોને પણ પેઇન્ટિંગમાં વર્ણવવાની આર્ટિસ્ટે ખૂબ સુંદર કોશિશ કરી છે. આવી જ રીતે ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાત અવનવી સફરે જશે, તમારા સુધી આવી અદ્ભુત કલા કારીગરો લઈને આવશે. તમારી હોસ્ટ દોસ્ત મિત્તલને રજા આપો. જય શ્રીનાથજી.